everyone, welcome to Unacademy. My name is Ashish and I'm a next time faculty, got 9 plus years of teaching experience, and I welcome all of you to Unacademy CAT YouTube channel for your CAT 2022 or OMEDS 23 preparation. Guys, एक बार फटाफट बता दो, do let me know if I'm perfectly visible and audible, which I believe I am. बस एक बार आपकी तरफ से आ जाए तो it is much more convincing. Yes. Okay, guys. Also, a very important thing: be a part of our family on Telegram. Look for Unacademy_Ashish. लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का. इस पे आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे ऑफ ऑल द सेशंस. आई डू पुट लिंक्स ऑफ ऑल माय फ्री सेशंस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल. Without wasting much of your time, guys, straight away attempt this question. Try this question. It's 3-7 and the discussion to this will start at 3:10. Discussion to this question will start at 3:10. Discussion at 3:10 p.m. Come on, guys. You have 3 minutes to solve this question. A very basic question. Attempt this question. Hello, Shruti. Let's do share the link. Very nice. Come on, guys. There are 8 persons S, T, U, V, W, X, Y, Z. They sit around circular table facing the center, but not necessarily in that order. T sits 2 places away from X, Y sits 3 places away from U, V sits to the immediate right of Y, S sits opposite Z. Neither T nor X sits adjacent to either V or Y. Who sits to the immediate right of V? That's the question. ये है आपका सवाल. Come on. Is am I audible? Take this out. Chalo. It's fine, na? I cannot see myself. Hello, Harsh. So let's discuss this question. Okay. So given that there are 8 persons, they sit around circular table facing the center, but not necessarily in that order. Very nice. 8 log hai facing towards the center. Shruti says W. Let's check out Shruti. Let's start solving the question. Okay, there are 8 persons. तो ये हो गया मेरा circular table. 8 persons to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. T sits 2 places away from X, Y sits 3 places away from U, V sits to the immediate right of Y. Let us place Y first, because अब Y को अगर यहाँ place कर दोगे तो V sits to the immediate right of Y. This will be taken care of. Y sits V sits to the immediate right of Y. This will be taken care of. Okay.
ठीक है. Y sits 3 places away from you. Y sits 3 places away from you. Okay. और यू के लिए दो ऑप्शंस हो जाएंगे मेरे पास. यू के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे. लेट्स नेम द प्लेसेस एज वेल. लेट्स नेम द प्लेसेस एज वेल. ये मेरा फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये मेरा सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये मेरा फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, sixth position, seventh position and eighth position. Where could be you? You के लिए I have two options. You can either be at 4 or you can be at 6. Hence I have to draw a second possible case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. Y is at 1 and V is at 2 and U is 3 places, Y sits 3 places away from you. So you could be either at 6 or you could be at 4. There are two cases possible. There are two cases possible. Yes, sir. Sure. This has been taken care of. Y sits 3 places away from you. ठीक है. Neither T nor X sits adjacent to V or Y. T यहाँ पर नहीं होगा, X भी यहाँ पर नहीं होगा. First case में T and X will not be at 3 and 8. Second one में भी T and X will not be at 3 and 8. Okay. Okay. ठीक है. T sits 2 places away from X. आप देखोगे फर्स्ट वाले में if T and X are 2 places away to each other, where they could be? T and X are 2 places away from each other. The only possibility is 5 and 7. They could be at 5 and 7. T X X T. और इस वाले में T X X T again at 5 and 7. Tx xt. Yes or no? Yes, sir. Chalo, T sits 2 places away to the X. Okay, this has been taken care of. S is opposite to Z. S and Z are opposite to each other. In first case, S and Z are opposite to each other. The only possibility is they are at 4 and 8 in any order. सेकेंड वाले में यू कैन नॉट प्लेस एस एंड जेड अपोजिट टू ईच अदर. स्पेस ही खाली नहीं है ना. एस एंड जेड अपोजिट टू ईच अदर के लिए स्पेस खाली नहीं है. तो दिस केस इज एलिमिनेटेड. दिस केस इज एलिमिनेटेड. द सेकेंड वन इज एलिमिनेटेड. फर्स्ट वन में W इज द लेफ्ट आउट. W वुड बी हियर. वेरी नाइस. हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ V? It is W. W sits to the immediate right of V. W is the answer to the question. W is the answer to the question. Okay. आगे बढ़ जाते हैं guys. लेकिन पहले very important notification. We have launched another batch for CAT 2022. Evening batch है. Starting from 20th, it goes by the name Aspire Batch for CAT 2022. इसमें आपको full coverage of syllabus. Classes will be concluded before exam. November 2022 में you get 50 plus full length mocks, 60 plus sectional tests, 30 plus GK test, skill builder test and batch tests. Everything is there. What else do we need? For that you need to take plus subscription, and a plus subscription comes for 24,800 for an year's duration and 22,550 for 9 months duration. 10% का स्टैंडर्ड डिस्काउंट आपको प्लस में मिल जाएगा. यू कैन अटेंड ऑल पॉसिबल बैचेस जो भी हम बनाते हैं. Not only this, you can also go with Iconic. Iconic is a personalized stuff जहाँ 1:1 doubt session, 1:1 concept discussion, 1:1 mentorship by top B school graduates for your profile building में आपको असिस्ट किया जाता है. लाइक 1 ईयर का कोर्स इज 39,500. 10% का स्टैंडर्ड डिस्काउंट अगेन आपको इस पे मिल जाता है. डोंट फॉरगेट टू इनरोल फॉर दिस.
The need of the RUCL. 24th April को 12:30 p.m. में we have a 2-hour free test which will contain 66 questions, the topper of which are entitled to win a MacBook Air, iPhone, AirPod, Apple AirPads, AirPods. ठीक है, and 100% scholarship in the form of subscription and Amazon gift vouchers. आस्क डाउट फीचर का भी आपको हेल्प लेना है. अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, यू कैन आस्क अप टू 3 डाउट्स एट वन गो एंड यू कैन गेट योर सॉल्यूशंस इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज. यू कैन आल्सो रिक्वेस्ट फॉर अ रिव्यू फॉर योर सॉल्यूशन. आपने कहाँ एरर किया, ये सब एवरीथिंग कैन बी डन. सो ये भी ऐप के ऊपर है. डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ऐप एंड यूज दिस फीचर फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन. कम ऑन गाइस, आंसर द सेकंड क्वेश्चन. ट्राई दिस वन. And the discussion to this question will start at 3:23. Discussion at 3:23 p.m. Okay. Good afternoon, Pooja. The discussion to this question starts at 3:23 p.m. There are 7 friends who sit around a circular table facing the center, not necessarily in that order. The following information is known about them. 1, 2, 3 clues given है. Who sits to the right of you? That is what is asked. Who sits to the immediate right of you? अरेंजमेंट से ऑलमोस्ट हमेशा क्वेश्चन आता ही है ना, हर साल. ट्राई करो. Who sits second to the right of you? Discussion starts at 3:23 p.m. Meanwhile, you guys can pin down your answer in the comment box. #2 and then your answer. #2 and then your answer. बोलो पूजा. ओके, ठीक है. Kumar Narendra says A, Shruti says D. Shall we discuss this question? Could you please suggest some resources for practicing DL? DL के रिसोर्स है ही नहीं. DL मतलब DI. रिसोर्स है ही नहीं. रिसोर्स है कहाँ? किस बुक में है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स? बताओ. किस बुक में है रुक्स एंड नेटवर्क? किसी में नहीं है. अरुण शर्मा एक ऑप्शन है, उसी से करो जितना कर सकते हो. इफ यू आर डूइंग ऑन योर ओन. है ही नहीं बेटा. फिर टुकड़ों टुकड़ों में रिसोर्स है इधर उधर. एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, एक क्वेश्चन वहां से उठा लिया. टू बी वेरी फ्रैंक, अरुण शर्मा ही आपके पास ऑप्शन है. उठाओ और सॉल्व करना शुरू कर दो. चलो. देयर आर 7 फ्रेंड्स PQRSTUV sit around a circular table facing the center, not necessarily in that order. Okay, let's start doing this. सर्कल ड्रॉ किया हमने. 7 फ्रेंड्स है ना. 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 friends. P sits third to the right of T. Awesome. Who is not adjacent to R. P sits third to the right of T. T को यहाँ पुट किया, अगर T को इधर पुट किया तो V would be here. Sorry, P would be here.
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अगर अगर हमने टी को वन पे पुट किया, पी वुड बी एट फोर। ओके, सर ऐसा करो कि ब्लैक से लिखो ये, मतलब अगर हमने टी को यहाँ पुट किया तो P would be here. This has been taken care of. Who is not adjacent to R? मतलब T is not adjacent to R. R will not be at 2 and 7. T is not adjacent to R. R will not be at 2 or 7. Okay. R is two places away from U. You don't know where is R or where is U. तो अभी के लिए ये क्लू इग्नोर किया जा सकता है. Q is not neighbor of P. मतलब Q is not at 3, Q is not at 5, Q is not at 3, Q is not at 5. V sits adjacent to both T and Q. Okay. V sits adjacent to both T and Q. इसका मतलब क्या है? V sits adjacent to both T and Q. V जो है ना वो T और Q के exactly बीच में है और सब साथ साथ में है. All of them are neighbors. So it could be TQ, V, QT. Got it? Yes. तो indicates T is at one of the end. T would be at one of the end. अब क्या है छोटू कि TVQ ना, TVQ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता था TVQ, और TVQ ऐसे भी हो सकता था. But since Q cannot be here, Q cannot be here, check this out, Q cannot be at 3, हम राइट साइड में नहीं जा सकते. Since Q cannot be at 3, हम राइट साइड में नहीं जा सकते. तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है TVQ का? TVQ का ऑप्शन मेरे पास है T, V and Q. बोलो yes sir, yes sir. This has been taken care of, this has been taken care of. R is two places away from U. मतलब R and U are two places away to each other. None of them can be at 2. So क्यों? क्योंकि 2 पे तो अगर रखा U को, R and U are two places away to each other. कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा है. तो अगर 2 पे रखा आपने किसी एक को, तो दूसरे को रखने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है. 4 या 7 वेकेंट होना चाहिए था. So R and U are at 3 and 5 in any order. Okay, what is left out? क्या बच गया है मेरे पास? P हो चुका है क्या? Q हो चुका है, और S would be at 2. That's the final arrangement. यश ये वाला फाइनल अरेंजमेंट है. अभी हमने जो किया, that's the final arrangement. And now we will solve the question based on this. Who sits second to the right of U? So U या तो 3 पे है, U या तो 5 पे है. When U is at 3, जब U 3 पे है तो R 5 पे हो जाएगा. And when U is at 5, V हो जाएगा 7 पे. Second to the right. So answer is either R or V. U के second to the right R भी possible है, V भी possible है. Answer is either R or V. Answer is either R or V. Because U का दो potential answer है. U could be at 3, U could be at 5. When U is at 3, R would be at 5. When U is at 5, तो V would be at 7. Second to the right निकालना था. Am I clear with this? Yes, sir, you are. समझा यश? चलो, shall we move ahead? Let's move ahead. अच्छा, same question है ना? How many persons sit between P and Q when counted from right of P? Right of P. P के right से count किया तो P और Q के बीच में there is only one person. Counted from right of P मतलब इधर से count किया तो P और Q के बीच में there is only one person. Third, who sits second to the left of T?
second to the left of T. T is here, first to the left, second to the left. Q is second to the left of T. Correct? Very nice. Chalo, try this question. The next one. Discussion to this will start at 3:33 या 3:35. उसके पहले अगर दो लोगों ने आंसर दे दिया, we'll discuss this question. Discussion at 3:35 p.m. चलो. Try this. Answer the question. Anybody? You guys have 2 more minutes. Okay, Shruti says fifth ka D. It cannot be determined. Uh, anybody else is trying? अगर कोई ट्राई कर रहा है तो लिखो हैशटैग मी और एल्स विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन. टाइमर के हिसाब से वी आर लेफ्ट विथ 1.5 minutes.
guys, come on यार. ठीक है, let's name them. Let's start the discussion. ठीक है. चलो. Q sits to the immediate right of the person from Indore. ओके. अगर मैंने इंदौर वाले को 1 पे बिठा दिया तो बेटा Q विल बी एट 2. ऑल ऑफ them आर फेसिंग द सेंटर. डायरेक्शन की कोई दिक्कत ही नहीं है. फर्स्ट वन हैज बीन टेकन केयर ऑफ. S is from Bengaluru and is not adjacent to person from Chennai. We don't know where is Bengaluru. We don't know where is Chennai. अभी के लिए we cannot take care of this. Third clue. Two persons sit between R and the person from Indore. R and the person from Indore के बीच में there are two people. We have Indore. We have Indore. अब R और इंदौर के बीच में देर आर 2 persons. अब 2% टुवर्ड्स राइट भी हो सकते थे, 2% टुवर्ड लेफ्ट भी हो सकते थे. किसी भी केस में R आ जाएगा ऑपोजिट ऑफ इंदौर. अगर 2% टुवर्ड्स राइट देखा तो 2 and 3 वेकेंट, 2% टुवर्ड्स लेफ्ट देखा तो 5 and 6 वेकेंट. वेरी नाइस. फोर्थ वन. Q sits opposite to P who is not from Mumbai. Q is here, P is here, and P is not from Mumbai. P is not from Mumbai. This has been taken care of. The person from Chennai sits opposite to T. We don't know where is Chennai or where is T. अभी के लिए 5 भी छोड़ना पड़ेगा. The person from Delhi sits second to the left of the person from Chennai. दिल्ली चेन्नई के सेकंड टू द लेफ्ट है. मेरे पास दिल्ली भी नहीं है, चेन्नई भी नहीं है, अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा. बट देखो बेटा, चेन्नई का रेफरेंस लेके हम आगे सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज चेन्नई हैज ऑकर्ड मेनी टाइम्स. चेन्नई हैज ऑकर्ड मेनी टाइम्स. सो हम क्या करेंगे ना, हम 2, 5 और 6 को एक ही साथ कंबाइन करके देखते हैं. ठीक है. द पर्सन फ्रॉम चेन्नई, सो चेन्नई के ऑपोजिट में टी बैठा है. यस और नो. चेन्नई के ऑपोजिट में टी बैठा है. फ्रॉम क्लू नंबर 5. द पर्सन फ्रॉम दिल्ली सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेन्नई. दिल्ली वाला चेन्नई के सेकंड टू द लेफ्ट में है. यस और नो. एंड एस हु इज फ्रॉम बेंगलुरु इज नॉट एडजेसेंट टू चेन्नई. एस एंड बेंगलुरु दे विल कम टुगेदर बट दे आर नॉट एडजेसेंट टू चेन्नई. ठीक है. तो चीजें क्या क्या है. टी, हम एक काम करेंगे, हम टी को प्लेस करेंगे. हम टी को प्लेस करेंगे और टी को जहां भी प्लेस करेंगे टी के ऑपोजिट में चेन्नई और चेन्नई के सेकंड टू द लेफ्ट दिल्ली. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. वेयर कुड बी टी. टी 1 पे हो सकता है क्या बेटा, बोलो. टी को हम 1 पे रख सकते हैं. अगर हमने टी को यहां पे रखा, अगर हमने टी को 1 पे रखा तो चेन्नई, आर चेन्नई से हो जाएगा और दिल्ली से क्यू हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉर्टेड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉसिबल है. सो टी कैन बी एट 1. यस सर. टी कैन बी एट 1. बोलो यस सर. टी कैन बी एट 1. टी कैन बी हियर. अब टी को 3 पे रख सकते हैं क्या. अगर टी को हमने 3rd पे रखा, चेक दिस आउट. टी को 3rd पे रखा तो चेन्नई आ जाएगा 6 पे, दिल्ली आ जाएगा आर पे. दिल्ली सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेन्नई. बट एस बेंगलुरु को आप कहीं नहीं पुट कर पाओगे. इन दिस केस एस एंड बेंगलुरु के लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं है. एस कैन नॉट बी फ्रॉम एस. यू कैन नॉट प्लेस एस फ्रॉम बेंगलुरु इन दिस केस. सो टी कैन नॉट बी एट 3. टी कैन नॉट बी एट 3. ये हमें समझ में आ गया कि T cannot be at 3. T can be here, T cannot be here.
नाउ टी कैन बी एट 6. अगर टी को 6 पे रखा तो चेन्नई वुड बी एट 3 एंड दिल्ली आ जाएगा इंदौर की जगह. दिल्ली सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेन्नई, दिल्ली इंदौर की जगह होना चाहिए था, विच अगेन इज नॉट पॉसिबल. So of all the cases, the only possibility is नहीं बताया था नरसिम्हा. Congratulations. चलो, of all possible places टी होगा 1 पे, चेन्नई आ जाएगा 4 पे, दिल्ली हो जाएगा 2 पे. ठीक है. एस फ्रॉम बेंगलुरु इज नॉट एडजेसेंट टू चेन्नई, सो एस एंड बेंगलुरु 6 पे. बोलो यस सर. ठीक है. पी इज नॉट फ्रॉम मुंबई, मुंबई कहाँ हो जाएगा छोटू? मुंबई वुड बी हियर, मुंबई वुड बी हियर. And which cities left? Hyderabad would be at 5, and P Q R S T U is from Mumbai. U is from Mumbai. ये क्लियर है? Give me a response. Okay. So who is from Hyderabad? हैदराबाद से B है, हैदराबाद से P है, ऑप्शन बी. हैदराबाद से ऑप्शन बी. Am I clear with this? Yes sir, you are clear with this. बोलो yes sir. हर्ष, it is not C. C नहीं है छोटू. चलो, next question. Who sits second to the right of you? Second to the right of you is P or the person from Hyderabad. Who sits opposite to you? You के opposite में I have S who is from Bangalore. The person from Bangalore. चलो, this question. Take this question as your homework. ये आपको try करना है खुद से. We'll stop here for the day and we'll discuss this in the next session. और आप सॉल्व करके यू कैन ऑल्सो रीच मी आउट पर्सनली. आप इसको सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हो. आई विल शेयर यू द करेक्ट अरेंजमेंट. ओके, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है मेरा. यू कैन शेयर इट फ्रॉम देयर एज वेल. मुझे पर्सनली आप शेयर कर सकते हो. अनअकैडमी अंडरस्कोर आशीष ज्वाइन कर लो, उसमें यू कैन शेयर मी द सोल्यूशन. ओके, चलो, आई विल शो यू वंस अगेन द टेलीग्राम आईडी. Unacademy underscore Ashish सर्च कर लेना and drop the solution to me.